everyone. I am doing previous year question of strength of material, which is one of the subject of mechanical engineering. I have completed few lectures. So today we are going to see a few more questions that is related to engineering services. Okay, these questions already came in engineering services examination. Okay, if you are new in this channel, so please watch those video also. That is based on strength of material, and if you are from mechanical engineering background, there are other subject also that also you can watch. Okay, this is about myself. Okay, I'm IIT Bombay alumni. Okay, so let's start strength of material previous year questions. Okay, so this is actually part 2 of stress strength. I have already completed part 1, so that's why it's starting from question number 12. That number doesn't matter. Okay, just remember the question. Okay, so this question already came in IES 1994 and IES 2000. Let's read the question. In the case of an engineering materials under unidirectional stress in the x direction, the Poisson's ratio equals 2. Okay, so actually sorry, I have forget to put the option. Anyway, in next slide there is option. Okay, so this is the actually option. I forgot to put the option there. No problem. So its answer will be A. Okay, so just divide with a strain in y direction divided by strain in x direction. So that is nothing but it is a ratio of Poisson's ratio. Okay, fine. Sorry for that mistake. I forgot to put option in the first slide. No problem. Okay, question number 2. Which of the following is correct in respect to the Poisson's ratio? That is new. The limit for an isotropic elastic solid. Okay, see, its answer is okay. It's a -1 to half. Okay, there is no alternate. You just remember this. You just memorize this. इसको रट लो, जैसे बोलते हैं ना कि रटना है तो रटना, जस्ट रट लो इसको, because this can directly ask in the I have seen this question in many places. Okay, they have directly asked the range. Okay, so it's nothing but -1 to half. Okay, so its answer is C. Fine. The next question. Okay, now see here, no need to read the question. It's nothing but it's a match list. Okay, you can see that here Young's modulus, modulus of Young's modulus, modulus of rigidity, bulk modulus, Poisson's ratio. Okay, shear strain, normal strain, transverse strain, volumetric strain. Okay, so how these are related to this, that we have to match it. Okay, so let's see. See, actually in match list, what we have to do? Okay, first use elimination method. Okay, because see, sometime you can know all the 4 of left side with the 4 of right side, but sometime you don't know. Okay, but you know 1 or 2, so using those 1 or 2, try to eliminate the answer. Sometime what happen, with eliminating 1 you can get, if you know one answer, you can eliminate three options. Okay, and suppose if it is not happening, at least 1 or 2 option will gone, then using second guess you can eliminate the other one. Okay, so in match list you don't try to match all. First if you know all, fine. If you don't know, so whatever you know, just match that, use elimination method and get the answer. Okay, so let's see. So the Young's modulus. Okay, Young's modulus is nothing, it's a normal strain. Okay, modulus of rigidity is shear strain. Bulk modulus is K. Okay, it is volumetric strain. You know that bulk modulus. Okay, volumetric strain. So, and the Poisson's ratio is transverse strain. Okay, so see here what you have to remember. This two is, I mean, all is easy. Is not nothing is tough. Okay, but sometime especially in GATE exam, they will give you option like you have never heard that. Okay. So the answer is C here. Next, if the value of Poisson's ratio is 0, then it means that the material is rigid, the material is perfectly plastic,
there is no longitudinal strain in the material. The longitudinal strain in the material is infinite. Okay, I think you can guess the answer. Its answer will be A. If there is no strain, means there will not be any movement, okay, in any of the direction. So we can say that material is result. Fine. For this question, there is no rocket science. Again, see, you can see the this question already came. I mean, it came in some of the year, and again, this is the older one. I think that was the latest question. This is the older one. So, which of the following is true? Okay. So, if you remember the previous question, its answer will be A, because there was -1 to half. So there is no option which is, there is half is available. So it will be, okay. So 0 to half. Next question. If the area of cross section of a wire is circular, and if the radius of this circle decreases half its original value due to the stretch of the wire by a load, then the modulus of elasticity of the wire P. Okay, so 1/4 of its original value, half value, double value, unaffected. So its answer will be D. It will be unaffected. Note, the modulus of elasticity is a property of material. Understood? So if you're changing, modulus of elasticity, so it is a property of material. So okay, so nothing is going to happen. So its answer will be D. It will be unaffected. Now next question. So there is, okay, let's read the question. The relationship between the Lami's constant lambda and Young's modulus E and the Poisson's ratio. Okay, so they are asking the relation between Lami's constant, Young's modulus, Poisson's ratio. It's a direct formula based problem. Okay, no need to derive and all those things. If you know the formula, you can easily solve this problem. So its answer is A. Okay, अगर इस क्वेश्चन को अगर आपने पहले नहीं देखा है, एंड इफ इस फॉर्मूला को आपने पहले नहीं देखा, यू जस्ट मेमोराइज दिस. ओके, इसको रट लो. दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू ई म्यू बाई 1 प्लस म्यू 1 माइनस 2 म्यू. क्योंकि क्या हो सकता है, गेट में इन तीनों की वैल्यू दे देगा और एक नंबर में पूछ लेगा कि लामिस कांस्टेंट क्या होगा. ओके, तो आप सोचते रहोगे. इवन कई बुक्स में भी ये फार्मूला नहीं मिलेगा आपको. ओके, हो सकता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जो भी बुक रेफरेंस में फॉलो करते हो, might be you will not get this formula. Okay, so you just remember this, lambda is equal to EV by 1 plus mu 1 minus 2 mu. Okay, so from here you can easily solve this question. Okay, so answer is A. Now next, again this is match list kind of, I mean not match list kind of, इसमें बताना है हमें कि कौन सा correct है कौन सा incorrect है out of these four. Okay, so which of the following pair is correctly matched? तो pair कौन सा match कर रहा है? Resilience, resistance to deformation, malleability, shape change, creep, progressive deformation, plasticity, permanent deformation. Okay, so see the answer. Its answer is, okay, we'll see that. Resilience, resistance to deformation. This is wrong. Okay, resilience से कोई मतलब नहीं होता. Resilience actually होता क्या है? It is area in elastic limit. Okay, जैसे कि जब stress कर्व आप प्लॉट करते हो तो what is resilience? It is area between stress between strain up to elastic point. तो इसमें ऐसा कुछ रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन की कोई बात ही नहीं होती. तो अगर आप देखिए फर्स्ट अगर आपका गलत है तो तो ऑप्शन ए बी इज गलत, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, option D is wrong. You'll get A will be the correct. Okay, even you can read the problem. Malleability, obviously, shape change, creep, progressive deformation, correct. Plasticity, permanent deformation. Yes, all three is correct. Okay. See that I told you, strain energy is stored within elastic limit is known as resilience. Okay, a toughness क्या होता है? Toughness up to fracture point जो भी area होता है हमारा between stress and strain, that is called toughness. Okay, so there is nothing resistance to deformation in resilience. Okay, so answer is A. Next question, what is the phenomena of progressive extension of material, that is strain increasing with the time at a constant load?
आंसर विल बी बी, क्रीप। क्रीप में ऐसा होता है। ओके, if you remember the definition of creep, up you can simply take this answer. Okay, so what is the phenomena of progressive extension of material that is strain increasing with time? Obviously, okay, जैसे कि आप अगर आप जो लोग गांव वगैरह से बिलोंग करते हो, okay, इवन शहर में भी यू कैन, शहर में उतना नहीं देखने का आपको मिलेगा, लेकिन जो लोग गांव से बिलोंग करते हो, तो अभी देखिए ये समर का टाइम चल रहा है, तो इस समय गेहूं की कटाई वगैरह हो रही थी, ठीक है। तो अभी तो देखिए, अभी तो मशीन आ गया है वो काटने के लिए, कि वो जाता है और खेत में काट के आपको ट्रॉली पे लद के आ जाता है। बट पहले क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले क्या होता था, गेहूं को काट के लाते थे, फिर मशीन होती थी। इवन हमारे घर पे भी ऐसा होता था, एक हम लोग एक जनरेटर टाइप का एक मशीन लगाते थे, फिर एक थ्रेसर लगाते थे, दोनों को पट्टे से कनेक्ट करते थे। उधर जनरेटर टाइप का जो भी मशीन थी वो हमारे थ्रेसर को चलाता था। तो वो जो पट्टा होता था ना, वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इट वाज स्ट्रेनिंग। तो वो क्या हो रहा है, वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे मूव कर रहा है, जो रोटेटिंग पार्ट होता है उस पे। तो वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ वहां पे यू कैन से डिफॉर्मेशन हो रहा है या फिर एक्सटेंशन, प्रोग्रेसिव एक्सटेंशन। ऑब्वियसली वो पट्टा आप देखोगे ना, शुरू में टाइट रहता है और फिर बाद में ढीला हो जाता है। या फिर आप आटे चक्की आप देखते हैं, आप अगर आप गए हो तो आटे चक्की में भी वैसा होता है। ओके, तो जैसे कि जिसमें गेहूं पीसते हैं, उसको एक दूसरे मशीन से कनेक्ट रखते हैं और उसको बीच से पट्टे से जुड़े रहते हैं। सो दैट इज नथिंग बट इट्स अ प्रोग्रेसिव एक्सटेंशन। ओके, सो इट्स आंसर इज। ये देखिए, मैं डेली जो लाइफ में एग्जांपल है उसको मैंने बताया, आप वैसे भी और भी बहुत चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मे बी समटाइम ऐसा भी होता है ना, आप लैब में हो, कोई ऐसी मशीन है जो एक ही जगह कंटिन्यूस हिट कर रही है, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्रीप। बट वहाँ पे ना टाइम के साथ वो चीज़ होना चाहिए। ओके, सो इट्स आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रीप डिफॉर्मेशन। तो ये कंटिन्यूस क्रीप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आई एम डीलिंग द टॉपिक ऑफ क्रीप। ओके, और देखिए इसमें जो भी प्रोसेस है क्वेश्चंस को करने का, इट इज़ अ टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं कि रैंडम नहीं होगा कि आपको कि पहले स्ट्रेस स्ट्रेन का मिल रहा है, फिर उसी में थ्योरी ऑफ फेल्योर का आ जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब थ्योरी ऑफ फेल्योर का होगा तो उसमें थ्योरी ऑफ फेल्योर के क्वेश्चन रहेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन है तो स्ट्रेस स्ट्रेन करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस के तो उसके ही क्वेश्चन रहेंगे। तो तो टॉपिक वाइज होगा। तो अभी क्रीप है तो क्रीप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचो कि बार बार क्रीप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इट्स मीन्स how many question, I mean how many type of question of from the creep is already came in these exams. Okay, fine. So the correct sequence of the creep deformation in a creep curve in order of their elongation is, okay, तो इसमें देखिए स्टडी, ट्रांजिएंट, एक्सेलरेटेड, इन तीनों का करेक्ट सीक्वेंस क्या? इट्स आंसर इज बी, ट्रांजिएंट, स्टडी, एक्सेलरेटेड। Transient, steady state, and accelerated. So this is the correct sequence in creep deformation. Transient, steady state, accelerated. 3 बार मैंने बोल दिया, अब मुझे लगता है आपको याद रहना चाहिए। Next question: the highest stress that a material can withstand for a specified length of time without excessive deformation is called. So I think you can guess the answer. Okay, because we are doing creep question, so its answer will be related to that. Okay, so fatigue strength, endurance strength, creep strength, so its option will be C, creep strength. Now next question: which of the following features improve the fatigue strength of a material, of a metallic material? So increasing the temperature is stretching the surface, overstretching, understretching. So its answer is D, understretching. With understretching में जो feature of fatigue strength of metallic material improves. Okay, so remember understretching, not stretching, it's stressing. Okay, यहाँ पे actually इस B वाले में stretching आ गया था, इस scratching it is. Okay, it's not stretching, it is stressing. Sorry for my mistake. It's tongue twister. Okay, kind of tongue twister. Next question: consider the following statement.
For increasing the fatigue strength of welded joint, it is necessary to employ grinding, coating, hammering, hammer pinning. Okay, the fatigue strength of welding joint is necessary to employ. Okay, तो इन तीनों में क्या होगा? ग्राइंडिंग, कोटिंग, हैमर। देखिए कोटिंग से कोई मतलब नहीं है फटीक में, ठीक है। कोटिंग का क्या लेना देना है फटीक में? कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। कोटिंग कर दो और वो फटीक का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ अ ग्राइंडिंग एंड इट इज़ हैमर पिनिंग। ओके, तो देखिए अगर आपको कोटिंग गलत है तो दिस इज रॉन्ग, जहाँ जहाँ टू आएगा सब रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, सो इट्स आंसर इज सी। ओके, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में भी आप देखिए, आप सब कुछ मत जानो, जो आपको पता है या जो आपको जो लगता है जो सही है या जो गलत है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन, राइट। सो इफ यू you know, here quoting is wrong, so you can easily, you know, delete the 3 options. Fine. Next, just read the explanation. A polished surface by grinding can take more number of cycles than a part with rough surface. In hammer pinning, residual compressive stress lower the peak tensile stress. Okay. Next, okay, it's finished. So I think we have dealt some 10 to 12 question. I think in the last video of fluid mechanics I told you that I will take 10 to 15 question. Okay, it will be 10 to 15 question, but maybe suppose there is 20 question in one of the chapter. Okay, so I'm not going to make five question or 6 question another video. So I will try to club that, or I will divide into 10. If suppose there is 18 question, so I will take all 18 question in one video. Okay, even so I will try to take maximum to 20 question. Is not like what you say huge number of question. जैसा कि 1 घंटे का वीडियो बना दिया और बोर हो रहे हैं देख के, नो इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट वॉच फॉर 10 to 15 मिनट, गेट 10 to 15 क्वेश्चन नॉलेज, दैट्स इट। बट देखिए अगर मैं जो भी सिविल सर्विसेज वाले जो भी मैं कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी टॉपिक वाइज कर रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के वगैरह वगैरह, तो उसमें जैसे ईयर वाइज कर रहा हूँ, तो मान लेते एक ईयर में 25 क्वेश्चन है, तो देन आई विल टेक ऑल 25 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उसको एक और वीडियो बनाओ, पार्ट्स बनाओ, देयर इज नो मीनिंग। और वो फास्ट होता है, ओके, उसमें उतना एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो इवन दो इट इज देयर इज 25 क्वेश्चन, आई कैन फिनिश इन 15 मिनट। बट इसमें मैकेनिकल में नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है। ओके, so I hope you like this video. Thank you for watching. Bye bye.